First Peter chapter 3, verse 15. So the shoes that they would have is like soccer shoe, spikes. Athletes, spikes. But where did the idea of grip come from? Rome. The army of Rome. That's how they did, the Greeks. That's why they are the ones who also started the Olympics, like the races. And that's how these guys used to run, because they had to run on soft, like on track. They didn't have these artificial turf like today, where they have these, these simple plastic or some modified plastic studs. Old football studs still had the pins. You have to take the screw, tighten them, and even now. But track and field, you have turf. You run on that smooth surface. Otherwise, how will you get the grip? And they say that Julius Caesar, that's why they built roads. And Julius Caesar's armies used to be able to go from one location to another like really fast. They could go over hills, they could march into forest, they could go over swampy land. So whether it is raining, any kind of weather, the armies could march because their shoes were made that way. So it was hard leather, and below it was these spikes. So they had a grip in any surface, and that's why they could move at speeds. Most other armies could not. They could not find their balance. They could not stand. But these guys could, and they were very strong warriors. But one of the major weapons was their shoes. They would soak it, they would make it hard like leather, and then they would wear it. And Paul is drawing that analogy, and he's saying that this is how the Christian life is. If your foundation of the gospel is not there, then you're in trouble. I was just talking to the young boy man, and I was saying, where is the first place you get cold? When you start feeling cold? Your feet. Your feet. You want to cover your feet so that you don't feel cold, right? If our feet get cold, if the gospel is not shared, then we are in trouble. We are opening ourselves to an attack of the enemy. They say that when you are sharing the gospel, one mouth is speaking, 2 ears are hearing. So your faith increases. How do you feel edified, encouraged when you share the gospel? In our church, Ecclesiastes class, in practical ecclesiology, we teach this. Whenever there is discouragement, person feels lonely, or they are feeling like low, or any of those things, 2 things: evangelize and be in church. One is evangelism, you are sharing. Second is edification in church, you are receiving. And what happens when people are feeling low? These are the 2 things they want to avoid. These are the 2 things they want to avoid. The 2 meetings in the church which have lowest attendance is what? Evangelism and prayer. They are low attendance. Not everyone will come. People, but this is the story in the sense that if the evangelism is missing, then the church has gone cold. And we never want to. I'm not saying that everyone has to meet at one location. If wherever you are, कहीं पर भी हो, सुसमाचार बांट सकते हो, ट्रैक दे सकते हो, अपने आप को keep yourself warmed up, अपने आप को तैयार रखो. You can share the gospel to anyone. You can give a track on the road. You can give it to a rickshaw driver, whoever. Track there. This is about God's love. It will keep you focused. It will keep you strong. It will keep you rooted. That's the purpose, So we have to that preparation. Now that word preparation means heart preparation. Like Pastor was saying, that it is both. I know why I believe, and if somebody asks the question, I know how I should answer. कैसे जवाब देना भी आना चाहिए, क्या बोलना भी आना चाहिए. Sunday evening, correct? There was an illustration Sunday शाम को. बस वो सवाल बार-बार पूछ रहा था, correct? और उसका आंसर हम लोग बार-बार दे रहे थे. ये झगड़ा नहीं कर रहे थे.
एक्चुअली लोग उसके सवालों से इरिटेट भी हो रहे थे. People are getting ऐसे कैसे बात कर रहा है. It's okay. उसको पता नहीं है. He doesn't know, you know. But then he was getting the answers also. And that is how it is, you know. You should be उस तरह से. It was good that it happened in church. I think बहुत अच्छा था कि वो चर्च में हुआ. Because मैं देख रहा था बहुत लोग स्माइल कर रहे थे. Because oh ये अगर वो हम लोग बाहर जाते हैं प्रचार करने के लिए, बाहर भी हो सकता है. Yeah. And same attitude remains the same. हमारा वही उसी तरह से है. ऐसा नहीं कि चर्च में प्यार से उससे बात करें, बाहर से झगड़ा कर रहे हैं. No. And if someone gets aggressive, like, you know, okay, move on. Don't get offended. बुरा मत मानो. उसने मेरा सुना नहीं. Next. Maybe next person is going to hear. Maybe next person will be like, जय वो बोल रहे हैं, अरे मुझे बाइबल कॉलेज के बारे में जानना है, right? You know, we don't know. So. Go ahead. Any questions? Your partner is not here today, Mr. Tushar. Otherwise, they would have a question on soul winning. Other question. In one of the conferences in US in our churches, they had kept a glass shelf, you know, शीशे का शेल्फ बनाया था. और जो भी मिशनरीज थे, जो फील्ड पे 10-12 साल से थे, उनके जूते ला के वहाँ रख दिए थे. They kept their shoes there. And there they put this verse, how beautiful are the feet of those who share the gospel, who bring glad news. So, उन लोग के पुराने जूते जो they had worn and they just kept them there. So like they were shoes. Very interesting. Like these guys are overseas, and you know, some pastors I know. उनके बच्चे भी they were serving in a South American country, and हम उनके संग थे. They're saying they went as young kids to एक South America में country में, और बोलते हैं वहाँ पे outreach करके आ रहे होते थे, सेवा करके आ रहे होते थे. कभी-कभी रास्ते में चोर आ जाते हैं आपका बैग लेके भागने के लिए, बिकॉज़ अमेरिकन हो, तो उनसे वो भी संभालना पड़ता था हम लोग को. मैं सोच रहा था कि 22 साल की लड़की है, मिशनरी है, और घर जा रही है सब कुछ सेवा करके, और कोई रास्ते में आके उसका बैग छीनने की कोशिश कर रहा है, और वो उसे लड़ रही है. और ओके, तो उस जीवन से वो कुछ सीख के they learned something. You also said about one thing about people have sown the wrong seed. You know, कई बार लोग सुसमाचार जब बांटते हैं तो they talk about Christ's death, they talk about that you know he died for your sins, but they don't talk about resurrection. वो पुनरुत्थान वो फिर से जिया, उसके बारे में बात नहीं करते. If you read book of Acts, every message of Paul, he talks about resurrection. हर संदेश में पौलुस पुनरुत्थान की बात करता है, every message. और अगर हम पुनरुत्थान के बारे में, resurrection के बारे में बात नहीं करेंगे, then our gospel is incomplete. हमने ठीक से प्रेजेंट नहीं किया gospel को. अगर हम लोग साउथ इंडिया में जाते हैं, या हम लोग पंजाब की तरफ जाते हैं, या अलग अलग क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर सुसमाचार इसको कहते हैं, वो ऐसा प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह के पास आओ, आपको चंगाई मिलेगी. यीशु मसीह के पास आओ, आपको वो बहुतायत से आपको आशीषित करेगा. यीशु मसीह के पास आओ, छुटकारा मिलेगा. यीशु मसीह के पास आओ, ये मिलेगा.
यीशु मसीह ये सब करेगा, मगर ये सुसमाचार नहीं है। यीशु मसीह ये सब करेगा, मगर ये सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार के जो अंश जो है, मुद्दे जो है, प्रेरित पौलुस पहला कुरिन्थियों के पत्र 15 अध्याय में स्पेसिफिकली बताते हैं, अगर ये सुसमाचार पर आपने सुना, ग्रहण किया और इस पर आप खड़े भी हैं, और यही सुसमाचार मैंने तुमको सुनाया, तो पौलुस बहुत स्पेसिफिकली कहते हैं कि ये सुसमाचार है और उसके मुद्दे ये है, ये तुम्हारी बुनियाद है, इस पर ही आप खड़े रहोगे। तो वहाँ के फॉर एग्जाम्पल गलातियों के पत्र में जब हम देखते हैं, सुसमाचार के साथ में ये लोग कुछ चीज़ों को जोड़ दिया, जैसे कि यहूदी के जो खतना हो या कुछ और काम हो, उनका भी वो भी आपको उसका भी पालन करना पड़ेगा। सुसमाचार के साथ में ना कुछ जोड़ा जा सकता है, ना कुछ निकाला जा सकता है, वो उसको उसी तरह रखना है, और वही हमारा स्टैंडिंग है। और पौलुस का ये जो, अगर वो मतलब पौलुस जिस तरह से वो गलातियों की पत्री में लिखते हैं कि दिन रात वो पौलुस के साथ में डिबेट कर रहे थे, उनको सुसमाचार के साथ में खतना भी करवाना चाहिए, इस बात को स्वीकार करने के लिए वो बहुत कोशिश कर रहे थे, मगर एक पल के लिए भी पौलुस झुके नहीं। तो वहां पर पता चलता है कि सुसमाचार के जो पैरामीटर्स है, ना उसमें कोई मिलावट होगी, ना उसमें से कुछ निकालेंगे। So that's the firm stand that we ought to stand our ground. इस तरह हम खड़ा रहना है सुसमाचार। Question, comment? In Acts chapter 1 it says that Jesus Christ went about doing good. रेत एक में लिखा है ना, यीशु मसीह सिखाने और भले काम करने के लिए निकले थे। What was the good work? Preaching the gospel. That was the good work. मरकुस के सुसमाचार में यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे यहाँ पर एक जगह पर बहुत सारे लोग ऑलरेडी सुन चुके हैं सुसमाचार, वहाँ पर बहुत कुछ हो रहा था, मगर यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे दूसरे क्षेत्र में भी जाना है, क्योंकि मुझे सुसमाचार प्रचार है। हाँ, तो उनके पैर जो है वो सुसमाचार के तैयारी से हमेशा बंद है। Like Christ, what was his good work? His good work was heaven to earth, preaching the gospel, moving to the cross, dying, rising again. And was he at peace at all places? Yes. हर जगह पे शांति थी. That was his good work. We don't say कि like कुछ लोग let's go feed the poor, गरीबों को खाना खिलाते हैं, nothing wrong in it. But अगर आप gospel नहीं share कर रहे हो, then what's the point? उनको स्वस्थ बना के नरक भेज रहे हो. You're feeding them and sending them to hell. What else? If you don't share the gospel, if you don't tell them about Jesus, let's give them food, then they will be able to hear. No. You tell who you are, you share, and then even if they're ready, great. If they're not, they're not. You don't want to mask it that way.
that we give the food and then no, we give the message first. Message first. The message is more important than anything else. And of course, we can plan and सब चीजें होती हैं. We say who we are, what we do. But there are so many feeding programs. There are organizations that you go and try and change the environment. वातावरण को बदलने आते हैं. वहाँ जाएंगे, हमको साफ सफाई सिखानी है. तो बोलेंगे हम लोग विश्वासी, लेकिन हमको साफ सफाई सिखानी है. और शाम को बच्चों की स्टोरीज, हमको साफ सफाई सिखानी है, हमको क्लीनिंग. नथिंग रॉन्ग इन इट, बट कलीसिया की स्थापना कब करोगे, सुसमाचार कब बांटोगे. एंड देयर इज सो मच ऑफ लाइक पीपल थिंक कि उनको बेटर लाइफ मिलनी चाहिए. अगर बेटर लाइफ मिले बट गॉस्पेल नहीं मिले तो फायदा क्या. दे विल नेवर बी एट पीस विद गॉड. परमेश्वर उनके बीच में दीवार बनी रहेगी. When it says preparation of the gospel of peace, that word peace means what? There is freedom from war. युद्ध से स्वतंत्रता है. There is no war. There is freedom in the war. There is no more war. अब लड़ाई नहीं. So if I have peace with God, परमेश्वर के संग मेरे शांति है, then it matters. तब जाके उसको कुछ मतलब बनता है. Yeah. No questions, no comments. So should we close? Should we close? No, yes. No one's answering. I hope they're at peace. Okay, we can close.